Yes, I'm recording this. Okay, welcome everyone. I am Aram Tariq, and who I am a person working for environment since 2011. In 2011 से लेके अब तक environment में पहले लोग कहते थे कि कुछ होने वाला है, वो जो कहते थे कुछ होने वाला है वो अब हो रहा है, ठीक है। और उस हो रहे को रोकने के लिए हमने बहुत सारी जो है वो इंस्टीट्यूट्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, और मी बाय माई सेल्फ इज द एम्बेसडर ऑफ सो मैनी प्रोग्राम्स, एंड वन ऑफ जो है एक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी मैं एम्बेसडर हूँ, वो है माई ग्रीन लैब्स। तो माई ग्रीन लैब्स इज बेसिकली कंसर्न विद कि आपने किस तरह से कार्बन एमिशंस को और किस तरह से जो वेस्ट जो है उसको किस तरह से आपने रिसाइकल करना है, राइट। सो आज हम अगर रिसाइकलिंग के बारे में सोचेंगे, अभी तो हमने जो बेसिक रिसाइकलिंग थी उसके बारे में भी जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। हम लोग जो है वो बेसिकली स्टेप लेने में या एक्ट करने में सोचते हैं, लेकिन नेचर जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल भी सोई हुई नहीं है, वो हमें सजा देने के लिए बिल्कुल एक्टिव है। और उसका जो एक ताज़ा एक्शन है वो फ्लड से पाकिस्तान आधे से ज्यादा डूब गया। So it is the right time. So I want if Anuja is my co-host and also the my partner in the program, जिसमें हमने वुमेन्स को एम्पावर करना है, खुद भी एम्पावर होना है, और हमने साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को भी जगाना है, जो नहीं जागते उनको झंझोड़ के जगाना है कि इससे पहले कि कोई और भूकंप आए और हम सब एंड हो जाए, we have to take some action and we have to do something. तो आई वांट कि हम सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन थोड़ा से इंट्रोड्यूस करवाएं। जी अनुजा, आपसे शुरू करते हैं। आपने कहा मुझे? या आपसे। Okay, so good evening everyone, welcome. और मैं अनुजा बाली, right now मैं पुणे में based हूँ, और I'm the founder of इटी स्किल्स स्कूल फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसमें हम गांव और शहर के बीच में जो गैप है, whether it's education, whether it's about facilities, infrastructure, और लोगों को सिखाना about e-waste, waste management, segregation। वैसे तो हम हमेशा कहते थे कि उनकी लाइफ बहुत सस्टेनेबल है जो गांव में रहते हैं, लेकिन पिछले साल से जो मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और बहुत सारे अलग अलग जगहों के गांव में और टियर 2 टियर 3 सिटीज में जब मैंने ट्रैवल किया, सो आई रियलाइज कि नहीं, ये गलत बात है कि वहां पर सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हैं। वहां पर भी प्लास्टिक्स का इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है और इतना लैंडफिल्स हैं, यू नो, द वेस्ट, the plots are filled with waste that are burning, and I saw कि सातारा में फायर ब्रिगेड आई हुई थी जो आग जलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं बुझ रही थी। सो एवरी सिटी, बिग और स्मॉल, मेट्रो और विलेज, everyone suffering from the mismanagement of waste, whether it's dry waste, wet waste or electronic waste। और अब जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हमें डेवलप होना है, सो अब हमारे सामने एक नया पहाड़ आ गया है कि हम अगर ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसे हम कैसे उसको एड्रेस करें, रिजॉल्व करें। एंड दैट इज व्हाई ये स्किल्स मैं रूरल चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन या अर्बन चिल्ड्रन, कोई भी हैं, मैं यूथ और चिल्ड्रन के को ये ट्रेनिंग और स्किलिंग देना चाहती हूँ, ताकि वो बचपन से ही उसे एक कॉन्सेप्ट जैसे नहीं बल्कि एक स्किल जैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। और दे शुड नो वेरी वेल कि मेरा जो ये पुराना हेडफोन है ये कहाँ जा रहा है, या मेरे ये बैटरीज हैं वो कहाँ जा रहे हैं। दे शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल कि वो लोग ट्रैश बिन में फेंक दे और वो लैंडफिल में चले जाए। एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि हम आज का दिन कमेमोरेट करेंगे, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। एंड वी
invited you all क्योंकि आप लोग सब experts हैं इस field में काम कर रहे हैं. So we would like all of you to introduce yourselves and then we'll start our discussion. Please go ahead. Asavari, you can start. Sure. Yeah. Thank you so much for both of you your introduction, and it's good to know that we are doing something like this in collaboration, and especially with. So we've been to lots of conferences where there are lots of representatives and people coming from West sector who are working in waste management as a profession. But this is kind of unique in a way to know that it's coming from heart, and not just a job. So I really appreciate your efforts in arranging it, and wish you all the very best for future of your collaboration. So coming back to my introduction, as I mentioned earlier, also I'm associated with Karo Sambhav. I have been working with Karo since 2017 when we started the organization, and I started as um, leading awareness programs for Karo, and now I have been also heading the bulk consumers collection channel, which is a part of whole collection universe. So that is what I'm doing. In terms of Karo Sambhav, I would like to mention a few things. So yes, we are doing electronic waste, but the larger dream that we carry is enabling circularity in all the products. Everything that we consume has to be circular, has to go and close the loop, right? So if you are using a t-shirt, I'm using this t-shirt, I don't know what will happen to this once I stop using it, once it turns into waste. So that should go again back to the ecosystem and go in the production cycle. So India started the EPR and the rules with electronic waste, but there are lots of things happening in the field of environment. I'm just mentioning these things because you mentioned climate change and the bigger issues apart from e-waste. So just an overview. So we intend to empower the organization, the manufacturers, the producers to close their loop. We aim to enable the enterprises to close their loops, go more circular, and we provide solutions in terms of that. So we've started, apart from e-waste, we also work in the same area for plastics, for batteries, glass, and there are a few other things that will be coming up soon, like tires and mattresses. So it applies to literally everything: your pencil, pen, this wire, the sheet, t-shirt, everything has to go back, right? So when we consume, we need to think about the end of life of that product when we start using it. So that shift in the behavioral aspect will take time, but at least through the systems or through rules or through government initiatives, the producers or who are the players in this value chain who are at least earning out of it are taking some steps, and that's a positive thing right now. That's good. Yes. Yes. Omkar, would you like to? Who's next? Yeah, I'm Omkar. I'm based in Pune, and I have been in this field for last 8 years, I guess. I started my journey as a volunteer in a Pune-based program, which is about plastic waste management in schools. Its name is Sagar Mitra. I'm right now working in capacity of trustee in that organization, Sagar Mitra, and working with Karo Sambhav as well in making sure that everybody is aware about the threats e-waste is causing to our lives, and trying to transform this system through designing new awareness programs and implementing those all over India. And most of it, Asavari covered it, so I don't think I need to cover anything else. Thank you. Priyasha, would you like to?
Yes, definitely. So even I like to want to share a couple of positives here since we are celebrating International E-Waste Day. So even Hula Deck, we focus largely on creating awareness, and we also have a very robust door-to-door collection because we want to provide this facility to every household, to every individual, that no matter what you have, even if it is just one mobile phone, one charger, we will collect it. So over the past few years, what I've seen with Hula Deck, I'm currently handling the marketing department. So what I've seen at Hula Deck in the last 5 to 6 years is the change in consumer behavior when it comes to recycling. What Where we were as an industry together, I think all of us have had a role here. So, all of us deserve a round of applause for this. But, as an industry, where we were when the first draft came in 2011 versus where we are right now in 2022, I think we've made a large impact on every stakeholder that is there in the entire EPR chain or the e-waste chain, starting from the bulk consumer to a manufacturer, importer. I think everyone. I think over the years, what I've also seen is how now people are more aware of waste and also e-waste. People are aware that recycling is something that happens, because in the past, I think all of us have faced that people don't know that e-waste can be recycled. Plastic is something people were still aware of, but I think as an industry, we've really moved forward when it comes to e-waste, because now compared to where we were, I think we still have a long way to go, but I think we've still made a huge impact, because we've seen with our customers in East, Northeast, especially, and in Kolkata, that now more or less people are coming forward on their own, taking that initiative of recycling, of disposing their electronic waste properly. So I think that's a very huge, that's a success for all of us. And I think everyone, in whatever little way they've contributed, have made a huge impact to where we are today. So I think long way to go, but we are at a great point right now. Yeah, as in we are being hopeful and optimistic when we say long way to go, but the awareness is majorly missing. That's what we feel. It's not a big deal कि अगर कोई ऐसी चीज है जो मैच नहीं करती है, जैसे आपने लोग जो घर में कंपोस्टिंग नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने सब्जी के छिलके के साथ में रिमोट कंट्रोल की बैटरी डाल दी है उसमें, सो डोंट दे फील वियर्ड कि अरे ये मैच नहीं करता कचरा, दे हैव टू स्टार्ट फीलिंग दैट पिंच कि मैंने कुछ तो किया है, लेट मी आस्क समवन. सो आई गेस एक ये भी स्टिग्मा है कि अगर हमने किसी से पूछ लिया तो हम छोटे हो जाएंगे, ओ तुमको ये दैट थिंग. तो इसीलिए मैंने और इरम ने यही बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, विमेन, मदर्स, पेरेंट्स, अडल्ट्स, जिनको बहुत होता है कि दे नेवर आस्क. उनको अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो सुन लेंगे. Excuse me. Okay, someone has to mute. So इसके कारण हमने ये डिसाइड किया कि हम ये लोगों तक लेकर जाएंगे. We will keep getting the experts who will share, and we will keep taking this. Doesn't matter 5 people join or 50 people join or 500 people, because 1 से 2 और 2 से 20 तक की इंफॉर्मेशन पहुंचनी ही है. ई-वेस्ट के बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है. इट्स लाइक अ न्यू थिंग, कि अरे आज भी बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं ओ ई-वेस्ट का मतलब क्या होता है, ओ अब ये भी होता है ई-वेस्ट में, वो भी होता है. बट हाँ, डेफिनेटली अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, बट I still think personally that still, even if we've reached out to 5% of the population right now, or even if 1% of the population, it's a start, because it's just a very, very new industry. E-waste especially is a very, very new industry. So I think slowly we will get there, that it will start pinching people ki battery or sabzi ke chilke ek bin mein nahi ja sakte. Yeah, and like Asavari said कि अब सारे लोग जो ये इस बारे में बात करते हैं, they are driven by some
something, you know. Yes. This discussion is driven by just that feeling that we want to save our environment, whatever is left of it. Yeah. And especially अब तो समय इतना बुरा आ गया है कि COP27 will be sponsored by Coca-Cola. So that's the talk of the town also. So अब बताइए क्या हो सकता है. So आप बताइए कि we all know awareness बहुत कम है. Actually, Anuja, जहाँ तक awareness concern है ना, awareness का मामला है. I personally मैंने कुछ ऐसे courses जो हैं वो design किए थे. आप कह लो कि 1 साल पहले before COVID ना, तो I want to कि मैं कुछ ना लोगों को उस style में deliver करूँ जो उनका जिसकी उनको आदत है, बनी बनाई चीज, right? हाँ. तो offices के लिए और उसके साथ साथ women's के लिए और उसके साथ जो है वो आप कह लो कि डिफरेंट यानी 3-4 जैसे कहते हैं कम्युनिटीज को एड्रेस करके, तो यूथ के लिए तो 3 और 4 कोर्सेज जो है ना, बकायदा कोर्सेज आई डिजाइन इट, बट पीपल आर नॉट सीरियस है. वो कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, राइट? तो अब इस जब थोड़ा सा हमारी डिस्कशन थोड़ी पीक पे जाएगी और थोड़े ज्यादा लोग आएंगे, तो गिव मी द 15 मिनट्स कि आई विल डिस्कस विद यू कि हमने जो एक बेसिक, जब तक हमें इस चीज की सेंस, लोगों में ये सेंस नहीं ना होगी कि यस वेस्ट की ट्रीटमेंट भी हो जाती है और किस तरीके से होती है, वो तरीका जब तक उन तक जाएगा नहीं, तब तक वो डेफिनेटली ये ई वेस्ट की तरफ, ई वेस्ट तो फिर एक आगे की चीज है ना, ठीक है? तो राइट, जिस तरह से आज हम इस दिन सब लोग बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं कि वेस्ट तो पुरानी बात हो गई है, नाउ अब आगे आने वाला दौर है या आने वाली जो दिन है वो ई वेस्ट के दिन है, बिकॉज यू नो अब हमारे हाथों में टैबलेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल्स हैं, बैटरीज हैं, और डे बाय डे जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन, हमारी फोकस जो है वो जो ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस है वो इतनी ज्यादा हो और वो अफोर्डेबल ही नहीं रहे, राइट? हियर इन पाकिस्तान तो नोबडी कैन अफोर्ड, यानी इट्स वेरी डे बाय डे ना प्राइसेस आर यानी ऊपर जा रहे हैं, राइट? सो इट्स वेरी नाउ जिस तरह से गैस गीजर, पीपल आर गोइंग टू यूज गीजर, राइट? उनको गर्म पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं, वो नहीं मिलेगा. सो व्हाट्स द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन? और फिर डेफिनेटली एनवायरनमेंट भी मैटर करती है. अगर एनवायरनमेंट खराब होती जाएगी तो अब एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब एनवायरनमेंट रिएक्ट करना शुरू हो गई है, क्लाइमेट रिएक्ट करना शुरू हो गया, कुदरत ने हमें हमारे तोहफे वापस करना शुरू कर दिए. So now it's the time that although few people, थोड़े से लोग हैं, लेकिन when we start thinking all together, then definitely we will find some solutions. Yeah, जैसे Yogita and Devika, would you like to share or give a quick introduction? आप कहाँ से join कर रहे हैं? Yes, sure. So I am Devika Chabra. I am currently a policy intern with Pinaka India, and I'm representing the organization. Though I really cannot call myself an expert because I'm a complete newbie to the policy sector and I'm still exploring where my interest lies. But I'm really glad to be a part of the session today, and I'm looking forward to learn a lot from all of you. Thank you. Thank you for joining. You can make policies related to e-waste. We'll be really thankful to you. What about Absolutely. Thank Yogita? you. Yogita? Then we have Lennox Archer. Not sure if that's your name. Yeah, it's my original name. So would you like to introduce yourself? Yes. Hello, everyone. I am Lennox Archer from Chennai. I am doing professional undergraduate. I am new to here and I am came to learn from all of you. That's all. Welcome, Lennox. So he's a Yogita, student. you were saying? Hello, I'm Yogita Khan and I'm from Nagpur. I'm not into any NGO or I don't have my own organization, but I am associated with NGOs in Nagpur. And passed from segregating waste is, I think I'm doing it from 2010 onwards.
I myself am I have done masters in social work. Wow. So I'm like aware about all these things, and I feel that it's my duty that I should be doing personally also at my home. Yes. I stay in a central government colony here in Nagpur. So being in the social work field, like I had been working also in the social work field from past 10 to 12 years, and still continuing individually only along with some NGOs in Nagpur. So the colony where I stay, actually I have started creating awareness there regarding, started with segregating of waste, and with one of the NGOs, CFSG, if you are aware, Yes. CFSG Leena. of Leena Buddeji. Yeah, Leena Buddeji. So with her help, is some families in my colony have started doing this compost compost work also. Like they are started using that. Actually, like I'm doing that. Thank you. That's great. क्योंकि एक इंडिविजुअल ही बहुत कुछ चेंज कर सकता है. So thank you for doing that. जैसे कि योगिता ने बताया कि वो करना चाहती हैं, वो जो बिहेवियर चेंज है, वो जो शिफ्ट है, आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ओमकार, would you like to say, because ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, electrical appliances and electronics is supposedly considered कि वो men know better about it. So, would you like to? अरे तुम्हें टेक्निकल नहीं पता, तुम that thing. तो आपको टेक्निकल पता है कि आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? I'm not sure whether I got your question correctly. Can Can you repeat the that? behavior change. Why are people not, when they know कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हमें नहीं फेंकना चाहिए इस irresponsible तरीके से, it's very simple, है ना? Yeah. तो कोई अपने दांत को नेल कटर से ब्रश नहीं करता है. Yeah. राइट? कोई लाल मिर्ची के पाउडर से दांत का मंजन नहीं करता है. सो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट सब्जियों में डाल दे या उसमें डाल दे, तो व्हाई दैट सिंपल चीज क्लिक क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको लगता है? बिकॉज यूथ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये सब यूज करते हैं, और वो बड़े अपडेटेड रहना चाहते हैं कि अरे ये पुराना हो गया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो व्हाई डू यू थिंक दैट बिहेवियर चेंज में इतना प्रॉब्लम हो रहा है? I guess we haven't, like, they haven't been sensitized about it, what they need to do about it. For example, if you teach students in starting from KG कि e-waste ये अलग stream of waste है and it should be sent for recycling अलग से and not should be dumped in dry waste का bin, then it is possible to bring this shift. It is lack of awareness, that is why this is happening. Like usual response of people would always be कि अच्छा जो कुछ भी कचरा है वो उठाओ और डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि इतना ही सिखाया गया है कि इट इज गुड टू थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन. लेकिन nobody I asks. would like to Yeah. add one thing here as well. So ये तो सही है ओमकार, because we don't really have seriousness about it in the education system also. The segregation and all comes at very later stage, so it's not really into us कि कैसे segregate करके डालना है. And also there is lack of convenient solution. So in terms of e-waste, I don't really know as a consumer कि मेरे पास घर पे chargers पड़े हैं, wires पड़े हैं, what do I do with it? So उसका कोई solution है ही नहीं. So घर पे, and usually it's very small amount of portion that actually goes to the landfill. When I talk about e-waste, through dry waste or
ड्राई और वेट वेस्ट. यूजुअली कहा जाता है ई वेस्ट, तो घर पे कोई रद्दी वाला या कबाड़ी वाला आता रहता है, ही कीप्स ऑन आस्किंग अगेन एंड अगेन कि कुछ है पुराना सामान तो दे दो, मोबाइल है पुराना, लैपटॉप है पुराना, दे दो. So it goes through that channel. So ultimately it lands in landfill, but it goes through unorganized sector, and that it has its own problems. But we are not able to provide sustainable solution to consumers, and that's why this entire chaos, I feel, in terms of e-waste, if I talk about. Priyasha, would you like to add? I would like to welcome Sulbha, who's joined us. Sulbha, would you like to quickly give an introduction? You're on mute. I'm Yes. Sulbha Kare from Pune, Sopanbag. Okay. Yeah, I am actually a fabric painting artist. I also do QMath online teaching for kids from grade KG to 8. Yeah. What is your experience with e-waste, electronic waste? Yeah, it should be like recycled or should be is used properly. Should be I don't know how it is processed after thrown. So what would you like to know about e-waste? आपका समझ लीजिए पुराना मोबाइल फोन है जो काला वाला था जिसको बटन दबाते थे. Suppose you have 2-3 of those and आप अब उसे dispose करना चाहते हैं. So what will be your first instinct? आप उसको सबसे पहले कैसे dispose करने का सोचेंगे? Yeah, I will try to ask housemaids or some like watchmen or some people who really need and don't have enough money to buy mobile can donate to them. We will try help us. to sell it. Yeah, you can. Somebody How? Yeah, I don't have resource or any shop where I can sell. I don't know. Yeah, OLX we can do that. Yes, on the OLX we can sell these things. Suppose your phones are not working. Nobody can use your phones. Then what will you do? Yeah, obviously it will be thrown in dustbin, which is not good. Which is not good. Okay. So which dustbin will you throw it? Yeah. If I have access to such recyclable means any organization, I will. Yeah, definitely I will approach them. आपको क्या पता है e-waste recycling के बारे में पहले से? It can be recycled, but I don't know how and where it happens. So see, let's say Sulbha represents the citizens who have questions about how, कैसे recycle करे, किसको contact करे. Devika is saying she can add something. Yes, Devika. No, I mean, you can complete what you were saying. Maybe I can share afterwards. I just wanted to share regarding what you were asking about behavioral change in people when it comes to e-waste disposal. So though I do not have a lot of knowledge, but having the psychology background, I remember studying about, forming attitudinal change models. And I think a very good example of that would be how today we sell tobacco. So मुझे ये लगता है कि जो है several components होते हैं, cognitive component हो गया, affective component हो गया. So affective component really impacts people. So ऐसे tobacco जब हम sell करते हैं तो हमें cancer की photo दिखाते हैं या फिर माउथ कैंसर का फोटो दिखाते हैं, तो people are really able to become aware about the consequences of eating tobacco, and that's when that fear trickles in and you don't feel like buying tobacco, or at least its sale reduces if it not stops. So I think a similar thing can be done when it comes to e-waste management also, because हमें पता ही नहीं है कि e-waste dispose of करके होता क्या है, मतलब वो क्या हो रहा है, अगर वो फील्ड पे जा रहा है, कोई लीकेज हो सकता है, उसके क्या consequences और repercussions हैं. So if from the very beginning या तो हमारी education में या
या फिर न्यूज में या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में कहीं पे भी कुछ भी ऐसे पोर्ट्रे किया जाए कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इन अ वेरी using a very effective component so that it really touches our heart and we know what sort of consequences it can have over the environment and on our life. That is when we might become more, I feel, particular about throwing it separately and disposing it off in the way it has to be. Yeah, exactly. Now you see how e-waste or waste segregation or waste management is connected to psychology, understanding how people behave, what triggers the behavior. So many things. It's just not a linear or an isolated component. That's exactly, we have to work together. The people who design advertising campaigns, creatives, experts who actually recycle, जो scrap dealers होते हैं जो बोलते हैं कि अरे नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, या the scrap dealers जो बोलेंगे हाँ हाँ इसको फेंको मत इसका बहुत कुछ हो सकता है. So the first people who are the क्या बोलना चाहिए convincing partners जो हमारे होंगे, I feel personally that they are the scrap dealers. Do you also feel the same? Absolutely. Please go ahead and share your thoughts. How important are scrap dealers for e-waste? Anju, I would like to add a couple of things. One, when you're talking about triggering the younger generation and getting them to recycle, I think there are two things that that really impact their behavior. One is convenience. A scrap dealer comes to your house, takes everything away together, gives you money right away, and everything that you have in your house, starting from those plastic bottles to cartons to your newspapers to your e-waste, he takes everything together. So that is one, the convenience factor, because now that we live in the age of Swiggy and Zomato, we want everything very fast, we want everything just a click away. So, and the second thing is that for the younger generation, even now, recycling or being sustainable is not cool enough. It's not something that they would want to share on their social media that, hey, I have recycled waste today. Oh, yay, hey, I segregate my waste. So it's not cool enough right now. So, which is why the younger generation is not so keen on, I want to segregate my waste, I want to recycle my waste. So that is a very, I think personally, very important factor that really impacts the younger generation, because they usually do something that they really feel nice about, something that they can boast about, something that they can put on their LinkedIn or their social media, or something like that, which I think as an industry we're not really working on. And when it comes to the scrap dealer part that you were talking about, I think what you're saying is completely right, but educating the scrap dealer and getting him to tell the customer that this is can be recycled, or give it to me, I will recycle it, is a very difficult journey. I think we already work with a couple of recyclers that we have formalized, some recyclers that now work permanently with us. So it has taken us a while to develop that trust, to get them to, understand that, dismantling electronic waste with their bare hands is wrong, or, dealing with electronic waste or handling electronic waste alone is harmful to their health as well as the environment. So that kind of education is very difficult at this stage. I think, of course, we have to start somewhere. So all of us as an industry should start working on that, but I think it's still very far-fetched. Because we are all women, and my suggestion is that we will start this from our kitchen, right? Because this is the habit. When a mother, एक माँ को जब हम educate करेंगे ना कि आपको waste में जो है किस तरह से waste को treat करना है, और किचन में किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को ट्रीट करना है, आपको अपने गार्बेज में सेग्रीगेट करना है जो किचन का वेस्ट है, वो एक जितना बेहतर मदर, जो एक बच्ची माँ जो सिखाती है ना अपने बच्चों को, जो हमने छोटे होते अपनी मदर्स को करते हुए देखा,
बहुत सी हैबिट्स हैं वो हमारे पास खुद ब खुद ही आ गई। तो डेट्स व्हाई एजुकेट करना वुमेन्स को, स्पेशली हाउस वाइफ्स को, इस इशू पे सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज कि आप सबसे पहले मदर्स को, उन लोगों को जो है वो एजुकेट करें जो क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में। वुमेन्स तो डेफिनेटली उनका एक इम्पैक्ट है, और जो खवातीन पढ़ी लिखी हैं उनका तो बहुत ज्यादा है, बट जो वो खवातीन जो घरों में बैठी हुई हैं वो भी एक साइलेंट है, वो आप कह लें कि उनका एक रोल है, और उनको अपना वो रोल, नाउ दे हैव टू प्ले देयर रोल, उनको अपना वो रोल जो है वो करना ही पड़ेगा। और अनुजा जी आप मुझे कहेंगी, मैं आप अपनी वो छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि हम अपने किचन से जो वेस्ट की प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम किस तरह से एज अ छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटा सा हम एक कोर्स की तरह से लोगों को हम, जिस तरह से आपका तो स्कूल भी स्कूल ऑफ क्लाइमेट है, राइट, तो आप मदर्स को वो एजुकेट करने के लिए कोर्स जो है वो आप किस तरह से जो है वो आप उनको करवाएं, और किस तरह से उनको बताएं कि दिस थिंग एंड दैट थिंग यू हैव टू डू दिस एंड द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, साल के बाद 2 साल के बाद हम इतनी कार्बन एमिशंस कम करेंगे, हम इतनी रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे। जब हम प्लास्टिक में, जब माँ बच्चों को बताएगी कि देखो प्लास्टिक को एक डस्टबिन में डालना है, फूड आइटम्स को दूसरे डस्टबिन में डालना है, और जो दूसरा है टिन है, जो इस तरह की जो टिन है या दूसरी वाली वेस्ट है, सख्त वाली वेस्ट जो है उसको एक थर्ड डस्टबिन में डालना, राइट। तो डेफिनेटली वो आपको कंपोस्ट जो है उसके लिए अलग से मटेरियल मिल जाएगा, एक डस्टबिन आपका फूड आइटम्स के लिए होगा, राइट। एक जो प्लास्टिक के लिए है वो आप रिसाइकल कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इस तरह के इस तरह की वर्किंग में आए हैं कि उन्होंने रिसाइकलिंग को जो है, जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो उनके पास जाएगा उसको रिसाइकलिंग के। मेरा ख्याल है कि जिसने प्लास्टिक इजाद किया था ना, उसने ये सोच के इजाद किया था प्लास्टिक को कि इसने कभी खत्म नहीं होना, ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, प्लास्टिक खत्म हो जाएगी। व्हेन आई स्टडीड अबाउट प्लास्टिक, तो मुझे इतनी हंसी भी आई और इतनी हैरत भी हुई कि किसने इजाद किया था, क्योंकि डिकम्पोज होने में इट विल टेक 1000 ईयर टू डिकम्पोज। जो भी मैंने पढ़ा वो ये था, दिस इज दिस because basically I am chemical, so this is the combination of this and this will decompose in that much 1000 years, right? तो जब हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो डिकम्पोज, इससे कभी टूटना भी है, इससे कभी खत्म भी होना है, तो अब हम जब इसको फेस कर रहे हैं, जब हमारे हर जगह पे ये हमारे लिए खराब बन गया, तो फिर डेफिनेटली हमने अपनी हैबिट्स को चेंज। So this is a suggestion from me, और बट लोग क्या कहते हैं, आई वांट लोग मुझे बताएं कि लोग क्या कहते हैं, उनके क्या आसावरी ने अपना हाथ उठाया है। आसावरी, Hi. yes. Yes, I just wanted to share a few points. So, very well brought a point, Anuja, that because the waste pickers or the kabadi walas that we call, they are a very important player in this entire value chain. And the collection systems that they have put in place is like no other, right? So across country, छोटा से छोटा टाउन या सिटी जहाँ पे भी आप जाओ, these guys are present and they are doing their job very well. So collection systems are in place to them. Of course, there are issues with the channel because it's not organized. Yeah. They are working in an unorganized sector. There is no health insurances for them. There is no proper work environment for them. Their kids are running around heaps of waste, right? So there are issues, and it will take time to solve. But again, it is, I feel, very not really fair to blame them also for doing wrong practices, because it's ultimately their bread and butter and they will earn from it. So they are doing this for earning. It is a consumer's responsibility that we think about the waste that we are going to generate before we consume. So it doesn't really arise at the point when I decide not to use any product. It starts when I purchase it, right? So when and again, this problem is going to get solved when there is money gets pumped in the system, because the kind of awareness that we are thinking of generating
it's a huge country we have. So, and there are lots of problems apart from waste as well. So it requires a brilliant marketing campaign. It requires lots of human resources. It requires a lots of things to, design good awareness programs and deliver them efficiently. And after that, it will take a long period to actually turn into behavioral change. So it requires systemic effort, and that will come only when players like producers, manufacturers get involved and make sure that when they are introducing their products into the market, they're also taking care of waste generated out of it. It doesn't end when they just sell, right? Yeah. So that will happen through systemic changes. And in order to pressurize them to do that, what a consumer can do: when I purchase my phone, what all parameters do I check? I'll check what are the competitors, what is the in same category, in same budget, maybe what are the features I'm getting, is that a plastic body or metal body, or what is the megapixels of phone, right? So these are the things I check. In addition to that, I should also check what are the producers doing for their EPR liabilities. If they are EPR compliant, how they are disposing of their e-waste, how they're taking care of recycling of their products, right? So that is where a consumer's responsibility starts. And it is a little bit complicated than dry and wet waste, because we don't generate electronic waste every day. Yeah. It is once in a year kind of an affair, and usually the tendency is to, I'll just keep it in my drawer because I don't have a solution. So when Diwali cleaning happens, then I need to clear out that drawer, and then I desperately look for solutions. So it is important that we also as a consumers act a little responsibly. And also I would still like to say that there is no blame on consumers as well, because as a country we don't really have too many solutions. So we need to be patient and make sure that we are thinking sustainably at least, and not really just doing anything that we can. Yeah, मतलब I totally agree, and I'm sure all of us agree कि जो हम scrap dealers बोलते हैं, वो लोग तो हमें बचा रहे हैं, इतने सालों से, and unorganized sector है, लेकिन फिर भी in that chaos also they have been working in a pretty smooth manner. एक सिस्टम में संडे को वो ठेला निकलेगा, वो आवाज लगाएगा, फिर सब लोगों ने ऑलरेडी collection tak it's clean only. So what they do after collection is where the problem lies. So electronic waste is not really a problem. Electronic waste management is a problem if that happens unscientifically. So we need to reach out to players like who are producers take back channel, or we need to reach out to the actual producer and see what they are doing to recycle their products, how SPCBs or state pollution control boards are taking measures to enforce the rules. So we can write petitions about it. We can make sure that we pressurize the government to enforce the rule properly. So these are the things that we can do, because I honestly believe that the changes will happen through systemic changes. Unless and until the system is there, individuals have very little to do. Yeah, on EPR इसका बहुत बड़ा एक सोल्यूशन का एक पार्ट होगा, बिकॉज अगर जब कोई खरीद रहा है फोन या हेडफोन या टीवी या फ्रिज या व्हाटएवर XYZ, अगर उसी वक्त उसे क्लियरली ये बता दिया जाए कि ये लीजिए आपका टीवी, आपको 20% या 10% डिस्काउंट मिला है, और जब आप इसे बदलना चाहें या जब आपका एक व्हाटएवर हो जाए, एंड ऑफ लाइफ पहुंच जाए, तब आप ये कर सकते हैं। अगर वो सोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचने के टाइम ही बता दिया जाए कस्टमर को, तो कस्टमर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो याद न रखे। अपने काम की चीज हर कोई याद रखता है। सो अगर वापस आप नई चीज खरीदने गए, तो वो सबसे पहला सवाल उसे ये पूछना चाहिए, क्या आपके पास पुराना टीवी है, क्या आपके पास पुराना मोबाइल फोन है। नाउ iPhone 7 और ऐसे सब के लिए वो लोग 200 रुपए और 500 रुपए देते हैं, है ना। इसके कारण क्या होता है कि वो सब लोग बोलते हैं, अरे मैं 500 रुपए में क्यों दूं, इससे अच्छा तो मेरे ड्रॉर में ही पड़ा रहे। And believe me, people have houses जिसमें एक corner maybe in a bag or a little carton box or a little drawer is filled with all these old electronics. Everybody has that drawer, yeah. Just because उनको नहीं चाहिए 100 रुपए 50 रुपए। So अगर उसका value is more than 50 रुपए और 100 रुपए, then people have to be open, transparent, and start offering more
कि अगर आपने 1 लाख रुपए का या 70,000 रुपए का फोन लिया था, सडनली आपको उसके 500 भी नहीं मिलेंगे, तो बताओ, दिस विल बी द It कॉमन is also response. a game of bulk. So what happens? So it's a perception again about e-waste that there is gold, there is platinum, you know, there are lots of precious metals. But if you think about one phone individually, उसमें 0.1 grams भी नहीं है. So and trust me, the recycling process doesn't just happen like that. Yeah. So there are lots of things involved. One, there will be a responsible collection happening. For that, there will be a team in place. Then secondly, there will be logistics, because the phone will have to move from point A to the warehouse, then warehouse to point B, the recycler. Then recycling happens. They have lots of staff involved, and properly recycling करने के लिए it takes cost, right? And then you get the recycling certificates and everything. So it's a process. If you need to do it scientifically, there is cost involved, and it's again in our mentality, हम रद्दी भी free में नहीं देते. Yeah. So and again, it's not our revenue, right? We are doing our jobs, we are earning from somewhere else. This is waste. हमारा कचरा है ये, वो भी देने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं. And it's so deeply rooted, especially in Indian culture. It's very hard to, you know, convince people whenever we go for awareness sessions कि you will get money. So हम bulk consumers को पैसे दे, जो कि हमें बल्क में मटेरियल कि 1 टन 1 ट्रक लोड दे दिया या जो भी, मतलब बड़ा चंक है, तो देन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और एवरीथिंग सेव्स. एक फोन के लिए, एक वायर के लिए भी people expect. Yes. And we are trying to build solutions around that as well. There will be a home channel coming up, and we try to satisfy the customers. But again, it is not really in our mind that we are doing it for environment. Yes, we are doing it for environment, but still पैसे भी चाहिए. So ये है, and I'm not blaming again anyone here because awareness नहीं है. ये नहीं पता है कि there are lots of things involved to recycle that product. And reuse की बात हो तो अलग है, मतलब जैसे हमने 10,000 का फोन खरीदा है, वो reuse होने वाला है, तो there will be a lots of value in it. But पूरा ही कचरा है, पूरा recycle ही करना है, आपको तोड़ना ही है फोन को, then there is not much. Yeah. But वो जो myth है ना कि अरे ये जो फोन रहता है ना, उसके अंदर वो इतना कंपोनेंट है, There are lots of myths around e-waste. Yes. वो जो एक लालच बन जाता है ना कि यार मेरा फोन लेकर they will use that gold and मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ मैं बेचूंगा नहीं. लेकिन वो हमें बताना वो 0.01 या whatever that thing. And very important point कि if you don't give away your e-waste, what you are doing is actually harming environment, promoting more mining. Yeah. So whatever that tiny amount of waste that your phone carries, that can be reused to make another phone. But अगर आप वो नहीं दे रहे हो, तो there is more mining happening every day, right? So that's why it's very important that you don't store your e-waste. It is not going to throw away any toxic fumes or acids or anything. These are all myths. Nothing happens to a mobile phone or a wire. Nothing happens if you just keep it like that for 1,000 years. Right? They are built robust. But उसका प्रॉब्लम ये है कि माइनिंग हो रही है, तो आपका जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं होता, जब तक आप वैल्यू चेन में वापस नहीं डालते हो, then there is more production value involved for other phones. Yeah. So with that, I think I'll have to take a leave. It's a hard stop for me. At 6:30, I have another call lined up. But it was really great chatting with you all, and wish you all the best. Looking forward to work with you guys in any capacity that we could. Omkar will be in touch. Yes, sure. Thank you. We also Thank you so much. You know, lots to learn, and we have where is I can't see Priyasha. Okay. Thank you. Bye. So bye. Take care. Bye, Sauri. So I think Priyasha has yes. Do you want to say something, Yashashri? Do you have something to say? Yeah, please unmute yourself and आप बोलिए. Hello everyone. मैं बस ये बोलना चाहती थी कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है, so I would like to join.
डेफिनेटली हम जो इटी स्किल स्कूल फॉर क्लाइमेट एक्शन है, हम सब लोगों को क्लाइमेट एक्शन के सॉल्यूशंस बताने के लिए ही ये सारे कर रहे हैं। और यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। मैं वो व्हाट्सएप की लिंक इसके ऊपर पोस्ट कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज, क्योंकि मुझे काफी लेट दिखा मीटिंग के बारे में, तो मैंने काफी लेट ज्वाइन किया, तो काफी कुछ मिस हो गया है, सो इसलिए। नो प्रॉब्लम, ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहेंगी, बट यू आर वेलकम एंड थैंक यू कि आपने फिर भी ज्वाइन किया। थैंक यू। राखी, आप वुड यू लाइक? प्लीज। हाँ जी, आई विल शेयर द लिंक। ओके। राखी, वुड लाइक टू शेयर समथिंग? Yeah, no, am I audible? Yes, you are. Yes. Hi, everybody. Hi. I too joined up pretty late because I was office का काम चल रहा था. कोई बात नहीं। So, but this e-waste, what I feel is because of this high level of consumerism, the amount of e-waste is increasing day by day. I don't know what was said before because I missed a lot. So one more important thing is if we can scale down and not have 3-4 phones. That's the only thing, because that's what I tell my daughter also. You must do with one phone at least. एक ही phone से काम चलाओ. Don't keep 2-3 phones. We are not that important. कि हमको एकदम 4 phone चाहिए, 5. We can have a battery of phones. It's no use. That's the only thing. And don't throw away things just like that. हम बहुत सारे लोग हैं कि नाली में गिरा देते हैं फोन. छोड़ो, क्या करना है इसका. मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो नाली में गिरा देते हैं, but of course we should not be doing that. नहीं, not the most expensive ones, but suppose the smaller phones like 2000-2500 वाला फोन, जो छोटा छोटा फोन है. I have seen people just throwing it in the garbage. Why? Yeah, we put it in some way. All the stores have their e-waste counters nowadays. Yes, हमें वही बहुत बड़े लेवल पे सबको बताना है कि कैसे हम अभी सिर्फ ड्राई और वेट वेस्ट में ही अटके पड़े हैं. Yeah, this is such an important thing, this e-waste problem. So, and yes, and I think Omkar also has to leave because he has a e-waste collection tomorrow. So उनका एक drive है. How do they do it? Omkar, would you like to spend 2 minutes talking about it? Sure. So we have planned a e-waste collection drive in various localities in Pune for now. And there are a couple of more cities as well where we are doing this. If you can go to our Instagram page, you will be able to see all the drives that we are conducting. Tomorrow we are having drive particularly in Pune for Simagad Road and Nare locality. And we have a van with us which we will run through different localities, meet a few people, few leaders there, and try to mobilize people and ask them to start recycling their e-waste. So this is how it goes. So I have a few things to deal about it for tomorrow. So I need to leave for that. And you can share the website जहाँ पे लोग जाके देख सकते हैं. Yeah, that is important. No? So, and I've shared the WhatsApp link where you can click and join. And as and when we have more conversations and more campaigns, you will all be informed. And Omkar, you please feel free to add your link website का जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं. Yeah, doing that. And thank you so much. हम लोगों को बहुत कुछ आप लोगों से और सीखना है और साथ में काम करना है, because awareness is majorly missing, so we need to do that, work on that together. Asma Imran, would you like to share something? क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, Assalamu alaikum. Okay, walaikum assalam from me because I'm the only person from Pakistan here. Okay, आसमा, हम जो बात कर रहे हैं वो वेस्ट के बारे में है और चीज वेस्ट. तो आप है वो बताएं, आपका क्या ख्याल है? I'm sorry, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज ठीक नहीं आ रही. आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में क्या कहना है या क्या एक्सपीरियंस है? जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करना बंद कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं उनके साथ?
मोबाइल फोन, बैटरीज, जो ये सब कंप्यूटर के केबल्स, ये सब जो रहते हैं ना, जब आपके वो काम करने बंद हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? बस ऐसे कि वेस्ट हो जाते हैं, वो ठीक तो होते ही नहीं है, तो फिर बस आप उसको साइड पे रख देते हैं। साइड में कहाँ रख देते हैं? ड्रॉ ड्रॉ में। हाँ, सबके घर में वो एक ड्रॉर है जहाँ पे सब लोग वो ये सब सामान जमा करते हैं। बिल्कुल, आपने भी वही कहा जो सब लोग ने कहा है। हाँ, वो एक्चुअली ड्रॉ में रख देते हैं। जो मैंने पता क्या किया हो, मैंने ऐसे साइड पे ड्रॉ बना दिया है, जो खराब चीजें हो जाती है ना, वो उसको साइड पे कर देती हूँ। तो अगर मेरे हस्बैंड को अगर वो ठीक होना हो तो फिर वो करवा लेते हैं, नहीं तो वो फिर पड़ी रहती हैं, ऐसे ही होता है। क्या आपको ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में कुछ पता है कि नहीं सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है? क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं सॉरी, नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, तो सॉरी होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अच्छा हुआ आप आए आज यहाँ पर और आप इस सेशन में शामिल हुए, क्योंकि हम यही सबको बताना चाहते हैं कि आज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे है, लेकिन देखिए कि जानकारी जो है उसके अभाव में, उसकी कम होने के कारण कितने सब लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ड्रॉर्स में पड़ा रहता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि क्यों उसको हमें रिसाइकल करने के लिए देना चाहिए। अभी अभी आसावरी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आपने वो फोन जो आपका खराब हो चुका है या नहीं चल रहा है, अगर आपने उसको वापस नहीं किया रिसाइकल करने वाले कंपनी को, तो उसके अंदर जो चिप है और उसके अंदर जो वो मेटल है जिसको यूज करके वो एक दूसरा फोन, नया फोन बना सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और उसके कारण वो लोग और माइनिंग करेंगे, खदानों में जाएंगे। तो एक तरीके से हमारा फोन अगर हम रिसाइकलिंग के लिए नहीं दे रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर हम उस दिशा में नहीं काम कर रहे हैं। तो ये हमें खुद को पहले समझना होगा। और अगर हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो हमें किसी से पूछना होगा, मतलब आगे बढ़कर, ये सोचकर नहीं कि मैं कैसे पूछूं या ओ मैं। और अनुजा, मैं राइट। चीज ऐड करना चाह रही हूँ। ये सेशन मैंने स्पेशली हाउस वाइफ्स और बहुत कम प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट किया था, स्पेशली हाउस वाइफ्स। वो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, उन वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए किया था कि जो घरों में रहती हैं और उनका कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो राइटली डेफिनेटली जब तक हम लोग सब आपस में मिल बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तो हम फिर कैसे सोल्यूशंस निकालेंगे। क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा सा एक गाना था, वो क्या, कोई पंछी हवा और झोंके, मतलब हवाओं को तो कोई नहीं ना रोक सकता, कोई पर्वत ना इसे रोके, समथिंग लाइक दैट। यू कांट स्टॉप देयर। जो प्लांट्स होते हैं आप उनको नहीं रोक सकते। आप जो हमारे सी है, हमारे समुद्र में जो टाइड्स उठते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। बट ह्यूमन बीइंग्स ऑल टुगेदर कैन डू। हम सब आपस में मिलके कुछ सॉल्यूशंस तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जरूर। वी हैव ब्रिजो, जिन्होंने अब तक कुछ कहा नहीं। वी हैव जन्नत और सयाली। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग। सयाली, एनीवन? So I What about? think it's the Yeah. time मैं अपनी presentation जो है वो it's the peak of the, I think सब लोग हैं। और एक जो छोटा सा मेरा एक effort है to start with the kitchen waste, कि हमने जो प्लास्टिक वेस्ट था उससे शुरू करें ताकि हम कुछ तो अपने दिमागों को खोलें। तो आई जस्ट वांट टू शेयर लिटिल समथिंग, लिटिल नॉलेज अबाउट ना सिंपल रिसाइकलिंग, राइट। हम सिंपल वॉइस, तो हम वेस्ट से ई वेस्ट का जो सफर है वो तो हमने बड़ी जल्दी किया, विद इन फ्यू इयर्स। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन ई वेस्ट बिकॉज ये भी एक प्रॉब्लम बन गई है और कोप में ये डिस्कस होगी, राइट। और बल्कि कल मैंने एक
जगह एक वेबिनार था, उसमें ये डिस्कस हुई है, राइट। वर्ल्ड बैंक के लोग बैठ के ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जी हम लोगों को जो है वो किस तरह से ज्यादा लोगों को मिलके जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ जो है वो आना। So anyhow, there are 4 more people in waiting rooms. Okay. No, don't let them enter, please. Oh, मैंने They look like spams. Please don't. एक को तो कर लिया, उसको आप फिर Don't let anyone enter. Okay, fine. Now I will share my screen. It's all about hello. Yeah. Okay. So it's all about tackling plastic in the workplace कि हमने workplace में किस तरह से प्लास्टिक को जो है वो हैंडल करना। तो ये मेरी एक प्रीवियस ऑनलाइन वर्कशॉप थी जिसमें जो है जिसमें हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया था कि जी हम क्यों एक्शन लें, हम प्लास्टिक और इसके बारे में पॉल्यूशन प्लास्टिक और ये वेस्ट के बारे में हम क्यों सोचें, ठीक है। तो उसमें स्पैच अल्टरनेटिव प्लास्टिक होम्स एंड स्कूल एंड ऑफिसेज, ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए एक मैंने छोटी सी वर्कशॉप लास्ट वीक की थी और मैंने अपने बारे में बताया था और उसके बाद मैंने बताया था कि प्लेसेस वेयर वी कोलाइड विद दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन की कौन कौन सी जगह जहाँ पे हमें विदाउट एनी हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तो जहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम जो है ना खुद ब खुद मिल जाती है, वो डेफिनेटली हमारी मार्केट्स हैं, राइट, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे सेमिनार्स हैं, हमारी जब होते हैं कोई भी गैदरिंग्स होती हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक और ये सारी चीजें जो है वो चलती हैं, वेडिंग्स में चलती हैं, ठीक है। और फिर हमारे लिए बहुत बड़े अच्छे से फिलोसफर साहब थे, इनकी एक कोट जो थी ये मैंने सबको बताई कि देखें जी ये क्या है जी कि हम चेंज को हम किस तरह से करते हैं कि हम कोई मॉडल बिल्ड करते हैं, राइट। जब तक हम कोई मॉडल बिल्ड नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगी, तो फिर हमने एक्शन क्यों लेना है। अगर हमने ई वेस्ट के बारे में आज सोच रहे हैं या वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वाई टू एक्शन, हमें क्यों एक्शन लेना है, राइट। तो प्लास्टिक बैग्स ये इसको अनीता प्लीज क्लिक करें, ये कौन लोग आए हैं। ये सब spams हैं, don't worry, you just continue. ओके फाइन। सो तो प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अभी तक राइट नाउ अभी तक जब तक हम कि दुनिया ई वेस्ट पे चली गई है अभी तक हम जो है वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट। सो तो एक्शंस जो है वो हमने क्या करने हैं, क्या क्या हम एक्शंस ले सकते हैं, हम वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल ये चीज रिमूव नहीं हो गई है जो आ गई है, मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और फिर मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। So okay fine. Now किस तरह से हमें क्या क्या जो है एक्शंस जो हैं वो क्या रिक्वायर्ड है, क्या एक्शंस लेने चाहिए, हमें वर्कशॉप्स करनी चाहिए, हमें पर्सनली इंटरेस्ट लेना चाहिए, राइट। और उसके बाद हमें सस्टेनेबल टीम बनानी चाहिए कम्युनिटीज में, अपने स्कूल्स में, अपने जितने भी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं हमें सस्टेनेबल टीम्स बनानी चाहिए। और फिर हमें बिन्स और प्लास्टिक के ऑडिट्स करने चाहिए। जब हम प्लास्टिक के ऑडिट्स करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ई वेस्ट का जो है वो पोर्शन भी आ जाएगा, उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो भी वेस्ट में आ चुका है, वो भी प्लास्टिक वेस्ट ही है। अगर ये मोबाइल फोन, हमारे टैबलेट्स, हमारी जो होती हैं तारें वगैरह सब कुछ जो हमारे वायर्स हैं वो सब की सब ई वेस्ट है, राइट। और जब हम इस पे चलते हैं तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा क्या करने का है, नेक्स्ट ये है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट यहाँ रहती है ना वो शुरू होती है हमारी डिस्पोजल से, ठीक है। तो डिस्पोजल से फिर हम उसको रिसाइकलिंग की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं उसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं और फिर प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऊपर से नीचे आना चाहिए लेकिन हम नीचे से ऊपर चलते हैं, राइट। तो हमें ये सारी चीजें मिल बैठ के सोचनी है और इसको क्या करना है, हमने कॉस्ट देखनी है कि हम कोई भी चीज जो है हम मोबाइल खरीदते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट में हर चीज कॉस्ट में सब चीजें इन्वॉल्व होती है, बाइंग कॉस्ट होती है उसकी जो भी चीज, लेकिन अगर फर्स्ट करें हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, हमारे
जैसा से आपने कहा कि हम उन्हें पहले से कहते हैं कि जी वो साथ कोई चीज वो एक साथ एक ये भी लगा दें कि जी जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा तो हमारे पास ले आइए, राइट, हम इसको दोबारा से ले लेंगे। तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली उसी चीज की कॉस्ट जो है वो उसकी कॉस्ट पर भी इम्पैक्ट करेगा। फिर रिसाइकलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसाइकलिंग तो डेफिनेटली हमने करनी ही करनी है हर चीज की, क्योंकि अगर हम रिसाइकल नहीं करेंगे और बनाते जाएंगे चीजें, तो प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज है जो कि बनाई ही हजारों सालों और सदियों के लिए है, ठीक है। तो अब हमें जो है ना वो एक्शंस जो है वो डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। और वो एक्शंस क्या है, वो एक्शन सबसे पहले ये है कि हमने अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो लॉन्च करनी है, लोगों को बताना है कि इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट क्या होते हैं। और ये डस्टबिन ऑडिट जो है ये हमने करने हैं, और ये हमने खुद से स्टार्ट करना है। जैसे एक बंदा है वो दूसरे को बताया कि जी ये कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमें लोगों के साथ अपने आप को क्या करना है, एफिलिएट करना है, या हमें इन लोगों के साथ जो है वो अटैच करना है। हम सप्लायर से बात करें कि जी आप हमें चीज़ें ऐसे ना दें, ऐसे दें कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। हम अल्टरनेटिव मटेरियल की तरफ जाएं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो है कोई नी जब एक्शन जो है वो ऐसे एक्शन ना लें, हम वो एक्शन लें जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जिनका इम्पैक्ट हमें आज से, अगर हम 5 साल बाद काम करें तो हमें मजा है कि यार हमने 5 साल काम किया, हमने इतनी चीज़ों को रिफॉर्म किया, ना कि हमने 5 साल काम किया और हमने कुछ भी, वी आर स्टिल वहीं पे खड़े। So for this, I'm going to end this little presentation. And again, Anuja, game is in your ball is in your court. Yes, thank you so much. And yes, हमें जब हम कोई सामान ले रहे हैं, that is the time जब हमारे पास पावर है, हमारे पास रिफ्यूज करने का पावर है, हमारे पास नो कहने का पावर है। और अगर हमने वो अपना पावर उस वक्त यूज नहीं किया तो उसके बाद में हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। Then we are we are the culprits. We did not do responsible recycling. And इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्पेशली ऐसा है जिसमें हम अपसाइकलिंग नहीं कर सकते। प्लास्टिक्स में, कपड़ों में, ये सब चीज़ों में हम फिर भी अपसाइकलिंग कर सकते हैं, जैसी हैं उसको एक बेटर बनाया जा सकता है। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बार यूज करके ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। वी हैव यश एंड Samiksha who have joined. So Yash and Samiksha, if you would like to say something, please share about your experiences with e-waste. Hi Anuja, thank you so much for inviting to this session. Like my loss that I missed a lot of it, but I was just able to join towards the end. And my experience with e-waste, like batteries, I think batteries are also e-waste, right? Yes. The ones that have gone bad. So especially those are very unsafe. I've myself heard of incidents where children are putting those things into their mouths, and it's very hazardous. So we really need to be careful about disposing of these kind of things like batteries, chargers, old chargers, power banks, and things like that. So because batteries, ये सब जो है वो so much of lead and so much of chemicals are in that कि जब आपने अगर देखा होगा कि अगर आपके रिमोट में बैटरी बहुत लंबे समय तक छूट जाती है और आपने उसको देखा तो वो लीक करने लग जाती है। When it starts leaking, that is when it becomes dangerous. And जब हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, so वो लीक होकर हर जगह जाती है। लोग कचरा जब मिक्स कचरा फेंक देते हैं, then it goes in your rivers or in the landfills, और वो रिवर का पानी जो गांव वाले लोग हैं वो पीते हैं, बिकॉज शहर से गांव की तरफ जाता है कचरा। एंड इसीलिए आप देखो हर गांव के आसपास आजकल 2-2, 3-3 कैंसर हॉस्पिटल्स बन गए हैं, क्योंकि contaminated water से they are suffering and they don't even know why, कि हर कोई जानता नहीं है कि ये शहर से आया है सारा कचरा जो उन लोग भुगत रहे हैं। सो अगर हमने being educated, being responsible, being aware, being in this society जो कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट और अपडेटेड रहते हैं ग्लोबली, अगर हमने रिस्पॉन्सिबली ई वेस्ट को रिसाइकल करने नहीं दिया, देन हु आर वी?
How different are we from those people who are absolutely ignorant about this concept कि अरे ये भी कुछ होता है कि बैटरी में से भी कुछ लीक होके मेरे नदी के पानी को पॉइजन कर देता है. So for the sake of those people जिनको हमारे कारण कोई harm ना पहुंचे, that humane side of each one of us should be activated starting today if you're not already very concerned about it. And the first thing you can start is from your home. Then second thing is your residential society, your office, your school, wherever you are, whatever your environment is. So Anuja, I would just like to add one more point here. Like this SDG number 12 is about responsible production and consumption, where we learn to use whatever we have to the full capacity before even thinking of disposing it. So even battery के लिए there was a tip which I had learned long time back कि आप बैटरी को सर्किट में अगर नहीं रखोगे, then you can save the battery and you can use it for a longer period of time. Like for things that we are using battery, if we are not using that, we can just keep the battery in a inverted position so that the circuit is not made. तब वो उसका बैटरी सेव होता है and we can use it for longer period of time instead of just खत्म हो गया, we throw it again, we buy. So the amount of batteries we buy will reduce that way. Yes, and at my home I have this rule कि कोई भी single use batteries use नहीं कर सकता. So there was a time last year when my son was because online classes चल रही थी, so he was completely dedicated to playing video games. And उस वक्त मैंने उसे बता दिया कि आप बैटरीज नहीं खरीद सकते. अगर आपको बैटरी यूज करनी ही है तो आप सिर्फ रिचार्जेबल बैटरीज ही यूज करोगे. सो हमने 2 सेट रिचार्जेबल बैटरीज के लिए वो बड़ी बैटरी और छोटी पतली वाली बैटरी दोनों जो होती है AAA AA, और that has been going on, and that's the only way. And whenever we have anyone जो कि कोई गिफ्ट देने के बारे में या गिफ्ट लेने के बारे में बोल रहा है, उस लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स विद बैटरीज कभी नहीं आते हैं. वी हैव कंप्लीटली डिलीटेड दैट ऑप्शन फ्रॉम आवर लिस्ट कि कोई भी किसी को भी बैटरी वाला चीज देगा जिसमें से लाइट, आवाज, ऐसा कोई खिलौना, ऐसे कोई चीज नहीं देगा. सो हम लोग ऐसे छोटे छोटे रूल्स अपने खुद के फैमिली में ला सकते हैं और दूसरों को भी इस बारे में बता सकते हैं. इफ यू टेल योर फ्रेंड, आई एम श्योर शी विल से ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, बट देन शी रिमेंबर दैट कि नेक्स्ट टाइम वो किसी को बता सके. सो ऐसे ही हम एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग में एम्पावर कर सकते हैं, स्पेशली विमेन, बिकॉज वो लोग हमेशा डिपेंडेंट होती हैं कि कोई दूसरा उनके लिए डिसीजन ले. ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, मे बी हम नहीं लेकिन और दूसरी हैं. तो अगर हम उन तक भी अपने घर के हाउसमेट्स, ड्राइवर्स जो भी हैं उनको भी ये बता सकें तो दैट अगेन इज लाइक टचिंग अपॉन मेनी लाइव्स टू रिड्यूस दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. Yash, would you like to say something? Hello? यश, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. ब्रिजो, you were trying to say something, but फिर you got. Would you like to say something? Okay, because Sayali, so that everyone who was part of this session gets to share something from their experience and then we can all learn. Yes, Sayali. Good evening, everyone. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Actually, I'm just starting my awareness camp, but it's at the initial level. But about sharing e-waste. So yesterday I've observed 2 days before that in front of me somebody is putting that e-waste in the water canal, right? Oh. So the canal which flow from city. So in front of me he was putting the gadgets into the canal. But at one stage he didn't listen to me.
and that's all because I need to quite. Yeah, देखो अगर क्या बोलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग अभी तक वेट और ड्राई वेस्ट में ही अटके हुए हैं और एक नया मॉन्स्टर ई वेस्ट का भी तैयार हो चुका है। सो हमें हर जगह वेट एंड ड्राई वेस्ट के साथ साथ ई वेस्ट को भी सेग्रीगेट करने के बिन्स लगाने चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसका करना क्या है तो वो क्या करेगा। सबसे आसान है पानी में डाल देना, किसी को पता नहीं चलेगा, वो बहते रहेगा। और फिर जो लोग ओशन क्लीन अप करने जाते हैं तो उनको जब जूते, क्रॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन ये सब मिलते हैं तो दे शेयर पिक्चर्स व्हेन वी सी कि मरीन लाइफ के नाक में स्ट्रॉ है या उनका मुंह पूरा नेट में अटका हुआ है या गले में पूरा केबल अटका हुआ है, तो वो क्यों है? बिकॉज किसी ने वो फेंक दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं था। तो हमें सबको मिलकर ये सबसे पहले अवेयरनेस और एजुकेशन पे काम करना होगा, और फिर लोगों के लेजीनेस पे तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली लीड बाय एग्जांपल। सो अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई गेस। Yes, ma'am. अनुजा, लाइक आई अटेंडेड वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था कुछ महीने पहले, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन किए गए कि we are teaching our kids to segregate the waste, but it all becomes such a sad story when the rack pickers come and just put the whole thing together, especially in Calcutta में हो रहा है where they don't have any segregation of garbage. Even if we are segregating at home, वो बाहर जाके it's all getting mixed up. Like how can we really tell the people to implement something in that regard? We need to ask. You are in Kolkata. There are more people from Kolkata. In fact, Hula Dek was Priyasha from Hula Dek was here थोड़े initially. तो उसके साथ में बात करके उसके साथ में कैंपेन हम शुरू कर सकते हैं कि e-waste and other waste। और क्यों चाहिए segregation? When you go to a cinema hall और उसके सिनेमा हॉल के बिल्डिंग के बाहर में आप वो बात करने लगो कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग 500 रुपए का टिकट देकर जो मूवी देखने आए हो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक 50 रुपए की बिन में या एक डिलीवरी वाले कार्टन बॉक्स में अपना ई वेस्ट सेग्रीगेट कर लो। यू डोंट इवन हैव टू बाय अ सेपरेट बिन फॉर दैट। कैन यू प्लीज डू दैट? अगर उतना भी आपने उनके कान में वो बात डाल दी तो आई एम श्योर अगर 100 में से 50 लोग करेंगे तो अगले बार 100 में से 75 करेंगे, अगले बार 100 में से 90 करेंगे, और एक दिन आएगा जब 100 में से 100 करेंगे। क्योंकि ये ऐसा बन जाना चाहिए, लाइक प्रियाशा सेड कि इट्स नॉट कूल, यू नो, तो it should become cool. Oh, you don't segregate your waste? What a fool you are. That should be the attitude. That should become the way. This is the message. This is the message of today's discussion. Now we will react to the people. Oh, what you are doing? You don't segregate. Are you fool or cool? Yeah, if you segregate, you are cool. Otherwise, you are a fool. So decide who you want to be. Very nice session, Anuja. Thanks to all of you. And thank you, everyone. We have एक कर लें एक स्क्रीनशॉट ले लें सबका। या अगर आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दें तो हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। And Brijo and Yash still did not speak, so maybe next session they will speak. Hi everyone, could you please switch on your video for like 5-10 seconds? Seher, Yash, Asma, Yogita, Brijo. Asma. Everyone who's segregating e-waste is cool. Okay, great to have you all. Thank you so much. And we will continue to have these conversations on various other kinds of waste. And if you have some, questions कि हमें इसके बारे में ज़्यादा पता करना है, तो you can just share
and the WhatsApp link is already on the group. You can join the WhatsApp group and you can share कि हमें इस बारे में session चाहिए, and हम next time वैसे session organize कर सकते हैं by getting industry experts. And we'll be happy to help everyone get empowered, and so that you can spread the word. Thank you, and happy International E-Waste Day. Okay, thank you, Anuja. Thank you, all of you. Thank you. Bye bye. Till next time. Thank you, everyone. Bye bye. Everyone.